बॉडी फ्लूइड के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टिश्यू चैप्टर में। ब्लड के बारे में हम लोग कंप्लीटली डिस्कशन कर चुके हैं टिश्यू चैप्टर में। बाकी बचा है लिम्फ। Lymph we will discuss in this chapter. Lymphatic system, lymph will discuss all, not blood. So body fluid almost we have done. We will just discuss about the blood circulation and lymph circulation. Okay na? Before that, today we will start at least few topic हम लोग discussion करेंगे, जैसे कि what is blood group? हम लोग आज start करेंगे blood groups. Mainly we will discuss here the two different type of blood groups. First blood group में आते हैं नंबर A, ABO blood grouping. And this ABO blood grouping are discovered by Carl Landsteiner. Carl Landsteiner who discovered this ABO blood grouping. And this ABO blood grouping actually on the basis of what? No, on the basis of type of antigen in RBC and type of antibody in plasma. तो यहाँ पे एक फर्स्ट क्वेश्चन मिल गया कि एंटीजेंस आर प्रेजेंट इन आरबीसी whereas the antibody are present in plasma. So on the basis of this, which type of antigen present and which type of antibody present in the blood, the blood group is of 4 different types. So here the blood groups are of 4 different types. मैं एक टेबल करके आपको दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में याद रखने में इजी हो. So this is the name of the blood group. The genotype of the blood group. Then your type of antigen. And antigen already mentioned कि antigen present in the RBC. Then type of antibody which is present in plasma. Donors group means the list of the blood group which can donate the blood and the recipients. We need to make a list of this. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. First the blood group is A. A blood group वालों का जीनोटाइप क्या होगा? ना IA और IA. उस IO को हम लोग क्या बोलते हैं ना, स्मॉल आई भी बोलते हैं, क्योंकि जो IO है ना वो एक्चुअली रिसेसिव एलील है, तो इसलिए स्मॉल आई भी लिख सकते हैं उसको. एंड एंटीजन क्या होगा ना, A एंटीजन. एंटीबॉडी एंटीजन A अगर है तो एंटीबॉडी A एब्सेंट होगा, बिकॉज एंटीजन A एंड एंटीबॉडी A अगर दोनों रहेंगे ना तो दोनों के बीच में क्या होगा ना, एग्लूटिनेशन हो जाएगा. एग्लूटिनेशन मींस द बाइंडिंग ऑफ द एंटीजन विद द एंटीबॉडी. डेथ हो जाएगा आरबीसी का. इसीलिए जिनका एंटीजन A होता है एंटीबॉडी A एब्सेंट होता है. लेकिन कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा ना, एंटी B, so as to prevent the what ना this agglutination. इसीलिए ब्लड ग्रुप जब भी हम लोग डोनेट करते हैं किसी को या किसी से रिसीव करते हैं ब्लड, तो हमेशा ये मैचिंग किया जाता है कौन सा, एंटीजन एंड एंटीबॉडी का.
Otherwise, mismatching of the blood gives rise to the clumping, gives rise to the binding of the antigen and antibody, gives rise to what? Death of the victim or death of the person. So antibody called as anti-B. Who can donate the blood to the A blood group? बताइए. A blood group कर सकते हैं and O blood group वाले कर सकते हैं, है कि नहीं? And who will receive the blood from the A? A and AB. अभी समझे? तो ऐसे ही आप लोगों को चारों करना है फटाफट. मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी करिएगा. So this is IB or IB small I. And it is B antigen. This is A antibody or anti-A. This is B and O. And this is B and AB. Next है AB blood group. AB blood group में क्या होगा ना, genotype will be IA and IB. Antigen will be both A and B. No antibody. जिनका AB या blood group होता है उनके blood में both antigen present है, so no antibody. And donor, who will donate the blood to the AB? The all A, B, AB, and O. Means AB blood can receive the blood from everyone. So AB को आप क्या बोलेंगे? Universal recipient. And who can donate the blood to the AB? The only AB. समझ में आ रहा है कि नहीं? Next and the last is O blood group, जिसमें जीनोटाइप क्या होगा ना, स्मॉल आई और IO. No antigen. So both anti-A and anti-B, both antibody will be present in the blood plasma. And who can donate the blood to O? Only O. है कि नहीं? And who can receive the blood from the O blood group? All A, B, AB, and O. Means O blood group is donating the blood to the everyone. That is why O blood group is called as what? Universal donor. तो एक बात आप लोग देखें कि A blood group may be homozygous, homozygous and may be heterozygous. दिख रहा है? Yes. And B blood group also may be homozygous, may be heterozygous. And AB always heterozygous and O always homozygous. समझ में आया? Yes. Homozygous का मतलब क्या है? Heterozygous का मतलब क्या है? Homozygous means they will produce one type of gamete. है कि नहीं? And heterozygous means they will produce two different type of gamete. Complete है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? So this is the first, that is AB of blood grouping. अभी हम लोग नंबर B में आते हैं, second type of blood grouping, RH blood group. RH blood group. This is the RH, stands for rhesus. And this rhesus antigen, that is RH antigen, and that is first discovered in case of what? Rhesus monkey. So it is first from the rhesus monkey. ये एंटीजन पहले डिस्कवर हुआ था rhesus monkey से by Landsteiner and Werner. First discovered this RH antigen, RH factor. देखिए जिसका RH पॉजिटिव है
RH पॉजिटिव मतलब क्या है? RH एंटीजन प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? प्रेजेंट। तो RH एंटीजन प्रेजेंट कॉल्ड एज RH पॉजिटिव। अगर RH एंटीजन एब्सेंट है then it is called as RH negative. इसके अकॉर्डिंगली हम लोग अगर जाएं देखें तो there are 8 different type of blood group: A positive, A negative, B positive, B negative, AB positive, AB negative, and O positive, O negative. And among from this, तो AB पॉजिटिव के पास क्या है ना, ऑल एंटीजन प्रेजेंट है। करेक्ट? A एंटीजन, B एंटीजन, RH एंटीजन तीनों प्रेजेंट है कि नहीं AB पॉजिटिव के पास? यस सर। एंड O नेगेटिव के पास क्या है? विथ नो एंटीजन। एंड जिसके पास ऑल एंटीजन प्रेजेंट है इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। Among from the A positive, AB positive and AB negative, who is universal recipient? AB positive, not AB negative. क्योंकि AB negative के पास RH एंटीजन एब्सेंट है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? लेकिन O negative and O positive, which is the universal donor? O negative. O negative, because all antigen absent, called as universal donor. इसका कंसेप्ट आप लोग समझे? जिसके पास एंटीजन टोटली एब्सेंट होगा वो किसी के ब्लड में जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो वो एंटीबॉडी स्टिमुलेट नहीं करेगा। दैट इज व्हाई नो मिसमैचिंग विल बी ऑकर। एंड जिसके पास ऑल एंटीजन है वो सबसे कलेक्ट कर सकता है, क्योंकि उसके पास तो पहले से ही सारे के सारे एंटीजन प्रेजेंट है, तो वो सबसे लेगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? नाउ वी आर कमिंग टू द टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, इज कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस और हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस और हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, इसको हम लोग बोलते हैं HDN। ये जो मिसमैचिंग ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी की वजह से होता है, एंड इसका जो स्पेशल एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछता है, व्हाट इज द क्राइटेरिया, व्हाट इज द कंडीशन इन विच द HDN ऑकर्स इन द बेबी, एंड दैट कंडीशन इज व्हाट? नाउ व्हेन the father is RH positive, mother is RH negative, जब फादर पॉजिटिव एंड मदर नेगेटिव होगा एंड फर्स्ट बेबी विल बी RH पॉजिटिव, second baby will again RH positive। एकदम टू द पॉइंट स्पेसिफिक में कर रहा हूं। अगर फादर पॉजिटिव हुआ, मदर नेगेटिव हुआ एंड फर्स्ट बेबी पॉजिटिव हुआ, तो ये जो फर्स्ट बेबी होगा वो नॉर्मल होगा। फर्स्ट बेबी विल बी नॉट अफेक्टेड विद द HDN। फर्स्ट बेबी पूरा का पूरा क्या होगा? नॉर्मल होगा। लेकिन ये फर्स्ट बेबी अगर पॉजिटिव हुआ तो सेकेंड बेबी जो कि पॉजिटिव होगा ही, क्योंकि फादर पॉजिटिव है ना,
तो बेबी जो है वो पॉजिटिव ही होता है, जेनेटिक्स में आप लोग पढ़ोगे। तो फादर पॉजिटिव है, फर्स्ट बेबी पॉजिटिव हो, तो फर्स्ट बेबी विल बी नॉट अफेक्टेड विद द एचडी एंड दैट विल बी कंप्लीटली नॉर्मल। बट द सेकेंड प्रेगनेंसी में जो सेकेंड बेबी होगा आरएच पॉजिटिव, दैट विल बी अफेक्टेड विद द एचडीएन। थर्ड बेबी पॉजिटिव होगा तो वो भी और ज्यादा सीवियर अफेक्टेड होगा। सो नेक्स्ट ऑनवर्ड्स पॉजिटिव बेबी जितने भी होगा वो सारे के सारे क्या होगा ना, विल बी अफेक्टेड विद द एचडीएन, दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, ए टाइप ऑफ एनीमिया। ये जो न्यूबॉर्न डिजीज है ये क्या है, एक टाइप का एनीमिया है। तो एनीमिया में आरबीसी नंबर इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? डिक्रीज करता है। एंड आरबीसी डिक्रीज करने से क्या होगा ना, एनीमिया होता है। एंड दिस इज ए टाइप ऑफ एनीमिया। हम दिखाते हैं कि कैसे एनीमिया होता है। तो ये सेकेंड में भी एचडीएन अफेक्टेड होगा। थर्ड अगर पॉजिटिव होता है, थर्ड भी पॉजिटिव होगा तो थर्ड में भी और ज्यादा सीवियरली अफेक्टेड होगा। तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल और ज्यादा डिक्रीज करेगा, एवरी सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में डिक्रीज करता जाएगा। लेकिन फर्स्ट अनअफेक्टेड होगा। हाउ इट इज अनअफेक्टेड, लेट्स सी। कंप्लीट है? नेक्स्ट पेज में मूव करें सब लोग, चले क्या? चलिए। मान लेते हैं फीमेल है, supposed to be the pregnant woman or pregnant female is there, and suppose to this is the placenta, this is the mother जो कि RH नेगेटिव है, this is supposed to the fetus जो कि RH पॉजिटिव, एंड मान लेते हैं ये प्लासेंटा between the mother and fetus. And remember, the placenta act as a barrier. Placenta act as a barrier, and that barrier prevent the mixing of blood. इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम में फीटल ब्लड एंड मैटरनल ब्लड मिक्स नहीं होता है, बिकॉज द प्लेसेंटा एक्ट इज ए कंप्लीटली बैरियर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब होगा क्या, एंड ऑफ फर्स्ट पैचुरेशन, मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी कंप्लीट हुआ, फर्स्ट प्रेगनेंसी कंप्लीट हुआ तो पैचुरेशन स्टार्ट होगा। फर्स्ट पैचुरेशन, एंड लिखने की जरूरत नहीं, खाली पैचुरेशन लिखिए। फर्स्ट पैचुरेशन होगा मतलब फर्स्ट पैचुरेशन मतलब फर्स्ट बेबी का पैचुरेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जैसे ही फर्स्ट पैचुरेशन होगा ना, प्लेसेंटा ब्रेक, प्लेसेंटा अगर ब्रेक होता है तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्लड मिक्सिंग होगा कि नहीं? यस। किसका ब्लड मिक्स हुआ? किसका ब्लड मिक्स हुआ बच्चों? फीटल ब्लड का मिक्स किसमें हुआ? मैटरनल ब्लड में हुआ कि नहीं? एंड फीटल ब्लड में RH पॉजिटिव है, एंटीजन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीजन? एंटीजन, antibody generating substance are called as antigen. Any substance which will generate the antibody are called as antigen. तो ये एंटीजन अभी RH एंटीजन कहां पे एंट्री किया? फीटल का RH एंटीजन अभी एंट्री किया मदर में, है कि नहीं? yes. उसके रिस्पॉन्ड में मदर के ब्लड में क्या प्रोड्यूस होगा ना, RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा।
Rh antibody will form in case of mother's blood as the Rh antigen will enter from the fetus to the mother when the placenta breaks during the paturation. क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है स्मॉल क्वांटिटी, तो यहाँ पे RH एंटीबॉडी भी स्मॉल क्वांटिटी होगा कि लार्ज क्वांटिटी होगा? स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि जितना एंटीजन उतना ही एंटीबॉडी। ठीक है ना? फर्स्ट में भी नॉर्मल होगा कि नहीं बोलिए? यस सर। फर्स्ट में भी अफेक्टेड हुआ कि अनअफेक्टेड हुआ? इसीलिए नॉर्मल होता है। सेम सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करते हैं। सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या हुआ ना, फीटस अगेन RH पॉजिटिव, तो दैट RH antigen which is already RH antigen which is already present in the mother's blood will cross through the placenta. Remember, एंटीजन बहुत ही कम क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा के थ्रू। हम लोग 12th में पढ़ेंगे कि कौन सा एंटीजन क्रॉस करता है प्लेसेंटा के थ्रू, लेकिन एंटीबॉडी दैट इज IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन G एंटीबॉडी कैन क्रॉस थ्रू दी व्हाट ना प्लेसेंटा। एंड ये जो RH एंटीबॉडी ये कौन सा है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन G है, दैट इज व्हाट ना IgG। लोग पढ़ेंगे 12th में कि इम्यूनोग्लोबुलिन इज ऑफ 5 डिफरेंट टाइप, A, D, E, G, M, 5 different type of antibodies are there. So which type of antibody is crossing through the placenta? IgG. बाकी antibody placenta के through cross नहीं कर सकते हैं, सिर्फ IgG cross कर सकता है। And this IgG which is crossing through the placenta from mother's blood to fetus, अब देखिए fetus के अंदर क्या आ गया? क्या आ गया? RH antibody की RH antigen? हाँ, अब ये RH एंटीबॉडी फीटस का जो RH एंटीजन है उसको अटैक करेगा कि नहीं? यस। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में दिस एंटीबॉडी, दिस RH एंटीबॉडी क्रॉस थ्रू प्लेसेंटा to fetus to attack तो RH पॉजिटिव RBC। समझ में आया कि नहीं? एंड इसी वजह से RBC क्या क्या हो जाएगा ना, डेथ हो जाएगा। एंड RBC का डेथ होगा, हम लोग पढ़े हैं कि RBC का डेथ होने के बाद हेमोग्लोबिन जो RBC में प्रेजेंट होगा वो हेमोलाइसिस होता है। सो यहाँ पे डेथ ऑफ RBC गिव्स राइज टू हेमोलाइसिस। एंड हेमोलाइसिस से क्या बनता है? हेमोलाइसिस से क्या बनता है ना, एक तो RBC काउंट डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। एंड बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन दैट इज बाइल पिगमेंट इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? तो हम लोग क्लियरली पढ़े हैं कि RBC ब्रेकडाउन और हेमोलाइसिस दैट हेमोग्लोबिन ब्रेकडाउन से क्या होता है ना, बाइल पिगमेंट फॉर्म होता है। एंड बाइल पिगमेंट अगर इंक्रीज किया, RBC डिक्रीज किया, लीड्स टू व्हाट ना, एनीमिया एंड जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न। This is called as HDN, that is hemolytic disease of newborn. अरे समझे कि नहीं? Yes sir. अब देखिए ये सेम प्रोसेस थर्ड में जाते हैं। सेकेंड प्रेगनेंसी के एंड में भी वही प्लेसेंटा ब्रेक होगा कि? Yes. तो सेकेंड प्रेगनेंसी के एंड में अगर प्लेसेंटा ब्रेक होता है, अगेन द फीटल RH पॉजिटिव ब्लड मिक्सेस विद द मदर, होगा? Yes sir. तो मदर के ब्लड में फिर से एंटीजन आएगा, तो मदर के ब्लड में फिर से एंटीबॉडी जनरेट होगा। और ज्यादा होगा कि कम होगा कि नॉर्मल होगा? और ज्यादा होगा। जब थर्ड प्रेगनेंसी होगा तो यही एंटीबॉडी फिर से एंट्री करेगा प्लेसेंटा के थ्रू इनटू द फीटस। ज्यादा या कम? ज्यादा होगा कि नहीं? मोर। So that will affect more the RH positive RBC of the fetus again in the third, in the fourth, in the fifth. और ज्यादा बढ़ता जाएगा। वैसे 2 से ज्यादा कोई पैदा नहीं करता है, ये अलग बात।
लेकिन हमारे पास इसका भी ट्रीटमेंट है। क्या ट्रीटमेंट है? प्रॉब्लम क्या है? देखो, आप लोग जानते हैं कि मेडिसिन 3 अलग अलग टाइप का है, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी। 90% लोग तो एलोपैथी की तरफ जाते हैं। एलोपैथी में डॉक्टर क्या पूछते हैं कि क्या आपको हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, आप अपना प्रॉब्लम बताते हैं कि XYZ जो भी है, तो वो एक एक प्रॉब्लम सुनता है, एक एक मेडिसिन लिखता है। गैस हुआ है, देखो गैस टेबलेट। खाना नहीं हो रहा है, थोड़ा भूख बढ़ाने के लिए एपेटाइजर लिख देते, मेडिसिन लिख। हेडेक है, हेडेक मेडिसिन। मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि मेडिसिन जो दिया जाता है दैट इज रिलेटेड टू डिजीज की, रिलेटेड टू सिम्टम। यस, हम लोग सिम्टम को रिड्यूस करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, सही है, एक टाइप का सही है। हमको प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ सिम्टम, तो सिम्टम को रिड्यूस किया जाता है। मेरा बोलने का मतलब यह है कि प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है। Here, which is the problem in case of erythroblastosis fetalis? Now, this RH antibody, yes or no? Yes, yes. अगर हम इस RH एंटीजन को बनने से प्रिवेंट करें या इस RH एंटीजन को ही दबा दें, इसको रिड्यूस कर दें, तो प्रॉब्लम सॉल्व है कि नहीं? So that we can say anti-RH antibody we can given to the mother immediately after the what na pregnancy. तो कंटिन्यू कर लीजिएगा, फटाफट लिखिएगा, 2 मिनट आपके पास है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ उसका ट्रीटमेंट क्या है। इट कैन बी treated by giving anti-RH antibody can be treated by giving anti-RH antibody to mother, मतलब RH negative mother immediately after burn of RH positive baby. After the birth of the RH positive baby, immediately हम लोग को इंजेक्शन देना पड़ेगा मदर को। कौन सा? anti-RH antibody that will reduce the formation of antibody. RH antibody means this is the antibody which is against the RH factor. यहाँ पे आप लोग को ये एनीमिया एंड जॉन्डिस ये पूछता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी करें।
रीड अगेन फैक्टर आरएच फैक्टर मतलब आरएच एंटी से हम लोग समझे व्हाइट इज कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस एरिथ्रोसाइट का डेथ होगा मतलब ब्लास्ट कर जाएगा मतलब वो हेमोलाइसिस होगा किसका फीटस का सबका कंप्लीट है क्या जल्दी 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 कंप्लीट है आपका तो पहले से ही कंप्लीट आगे चलें तो ये तो दो टाइप का ब्लड ग्रुप हो गया तीसरा जो ब्लड ग्रुप टाइप्स मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा सा आउटस्कॉट है बहुत ज्यादा सिलेबस से बाहर है मैं खाली थोड़ा सा आइडिया देने के लिए आपको दे रहा हूँ दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप दैट इज बॉम्बे ब्लड बहुत ही रेयर ब्लड इसका कंसेप्ट क्या है मैं खाली थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ ज्यादा इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आना चाहिए मतलब आप लोग ज्यादा क्वेश्चन मत पूछिएगा क्योंकि इसका रिसर्च करेंगे तो काफी ज्यादा आता है इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन है बट मैं थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ जैसे हम लोग देखें कि ए बी एंटीजन इन केस ऑफ एबीओ देयर इज आरएच एंटीजन इन केस ऑफ व्हाट ना आरएच ब्लड ग्रुप यहाँ पे और एक एंटीजन है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट ना दैट इज एच एंटीजन एच एंटीजन एच एंटीजन का दो एलील प्रेजेंट है एक है कैपिटल एच एलील दूसरा है स्मॉल एच एलील इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो तीन अलग अलग टाइप का जीनोटाइप आएगा एच एच कैपिटल एच स्मॉल एच स्मॉल एच स्मॉल एच ये सर नो इसमें एच एंटीजन प्रेजेंट here also H antigen present here H antigen absent खाली आइडिया देने के लिए बोल रहा हूं तो H एंटीजन प्रेजेंट कब होगा जब डोमिनेंट एलील होगा कि रिसेसिव एलील होगा डोमिनेंट एलील सो कैपिटल H होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल H स्मॉल h हेटेरोजाइगस दोनों ही केसेस में H एंटीजन प्रेजेंट है तो दोनों ही केसेस में H एंटीबॉडी एब्सेंट होगा कि नहीं लेकिन ये जो HH है इसमें H एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट होगा इट इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ब्लड ये जो HH स्मॉल h है ना यही है बॉम्बे ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप जिनका होता है उनका एक्चुअली स्मॉल h होता है मींस नो H एंटीजन उनके ब्लड में H एंटीजन नहीं है कौन सा एंटीबॉडी है H एंटीबॉडी लेकिन प्रेजेंट है लेकिन H एंटीजन एब्सेंट एंड दिस इज वन टाइप ऑफ व्हाट ना ओ ब्लड ग्रुप ये जो बॉम्बे टाइप ब्लड ग्रुप है नॉर्मली आप अगर ब्लड टेस्ट करेंगे ना ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप वालों का ब्लड टेस्ट करेंगे ना तो आपको मिलेगा कि ये ओ ब्लड ग्रुप ही है आपको पता नहीं चलेगा कि वो बॉम्बे है कि नॉन बॉम्बे बात को समझ रहे कि नहीं तो ये कंप्लीटली जस्ट लाइक ओ ब्लड ग्रुप लेकिन ओ ब्लड ग्रुप नॉर्मल एंड ओ ब्लड ग्रुप बॉम्बे टाइप दोनों में डिफरेंस क्या है
नॉर्मल ओ ब्लड ग्रुप जो है उनका H एंटीजन प्रेजेंट है, H एंटीबॉडी एब्सेंट है। लेकिन जो बॉम्बे टाइप ओ ब्लड ग्रुप है उनका H एंटीजन एब्सेंट है, H एंटीबॉडी प्रेजेंट है। सो दिस इज द रीजन व्हाई बॉम्बे टाइप ओ ब्लड ग्रुप कैनॉट इवन रिसीव द ब्लड फ्रॉम नॉर्मल ओ। ये किसी से भी ब्लड नहीं ले सकते, दे कैनॉट गेट द ब्लड फ्रॉम एनीबॉडी, किसी से भी ब्लड ये रिसीव नहीं कर सकते। एंड ये सबसे रेयरेस्ट ब्लड है, ये फर्स्ट डिस्कवर हुआ था बॉम्बे में। कैसे? एक एक्सीडेंट हुआ था एक बच्चे का, एक मतलब एक पर्सन का, तो जब ब्लड टेस्ट किया गया तो उसका ब्लड ओ निकला। नॉर्मली ओ ही है, बॉम्बे टाइप का क्या है ना, ओ है। जब ओ ब्लड ग्रुप को अगर ब्लड चढ़ाना हो तो किससे ब्लड लेंगे? ओ से। तो नॉर्मल ओ का ब्लड ग्रुप उसको दे दिया गया, तो कुछ दिन के बाद मतलब कुछ घंटे के बाद उसका डेथ हो गया। अब वो दे रहा है ओ को, तो डेथ तो नहीं होना चाहिए, मिसमैचिंग तो नहीं होना चाहिए। जब धीरे धीरे रिसर्च किया गया तो पता चला इट इज नॉट द नॉर्मल ओ ब्लड ग्रुप, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ओ ब्लड ग्रुप इन विच द ए एंटीजन इज absent but H antibody is present called as Bombay, इसीलिए नाम हो गया। ठीक है, ये रेयरेस्ट ब्लड है, इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं करना, मैं खाली आपको आइडिया दी, दैट्स इट। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म और ब्लड कोagulation। ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोagulation, the property of blood change from liquid state to gel state after injury to stop bleeding is called as blood clotting and blood coagulation, and that will be initiated। ये जो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म है फ्यू सेकेंड्स टू फ्यू मिनट तक ये कंटिन्यू करता है, डिपेंड करता है कि इंजरी का साइज क्या है। अगर इंजरी का साइज बहुत ही छोटा है तो फ्यू सेकेंड में भी क्लॉट हो सकता है, अगर इंजरी का साइज बड़ा है तो फ्यू मिनट तक ये कंटिन्यू कर सकता है। सो इट इज वेरी फ्रॉम सेकेंड्स टू मिनट्स द प्रोसेस ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द टोटल ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। अकॉर्डिंग टू according to that is International Commission on Blood Coagulation, International Commission on Blood Coagulation, that is in 1954, according to the International Commission on Blood Coagulation, 12 factors are involved। पहले एक्चुअली 13 फैक्टर था, एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द ब्लड कोagulation मैकेनिज्म और कमीशन एक्चुअली 13 फैक्टर है, लेकिन एक फैक्टर जो है वो उसका जस्टिफिकेशन प्रूव नहीं हो पाया, इसीलिए 13 फैक्टर हम लोग बोलते नहीं है, क्या बोलते हैं? 12 फैक्टर्स रहते हैं। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड द 12 फैक्टर वन बाय वन, खाली इसका नाम याद रख सकते हैं, ज्यादा नहीं। एंड ऑल टू बी दैट इज इंडिकेटेड इन द रोमन लेटर, मतलब रोमन लेटर में उसका न्यूमेरिकली उसका नंबरिंग किया जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ, फैक्टर 1 दैट इज fibrinogen, and that is synthesized in liver।
Factor number 2, prothrombin. That is also synthesized in liver. Factor number 3, tissue thromboplastin. Tissue thromboplastin and platelet thromboplastin. मतलब ये फैक्टर नंबर जो 3 है, दैट इज एक्चुअली थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि दो टाइप है. टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रेटेड बाय डैमेज्ड टिश्यू and platelet thromboplastin that is secreted by platelets of the blood, that is blood platelets. तो ये फैक्टर नंबर 3 हो गया. Then factor number 4, calcium ion. याद रखिए कैल्शियम आयन का फैक्टर नंबर कितना है? 4. याद रखिए. नंबर 5, प्रोएसिलरीन और लैबाइल फैक्टर. प्रोएसिलरीन और लैबाइल फैक्टर. This is also secreted by liver. फैक्टर नंबर 5 तो आप लोग का कंप्लीट हो जाए तो कंफर्म कर लीजिए मुझे. Complete. So coming to the next page, factor number 6. Accelerine. And this is the factor which is no longer used. इसीलिए इसको हम लोग क्रॉस मारते हैं. फैक्टर नंबर 6 is no longer used. Factor number 7, pro-converting. Pro-converting or stable factor. This is also synthesized in liver. Number 8, anti-hemophilic factor A. And this is synthesized in liver. And आप लोग शायद पढ़े होंगे हेमोफीलिया. पढ़े हो ना हेमोफीलिया? इट इज जेनेटिक डिजीज एक्चुअली. एंड हेमोफीलिया में होता क्या है? हेमोफीलिया में होता है क्या? ना ब्लड इज अनेबल टू क्लट. ब्लड इज अनेबल टू क्लट. या तो स्लोली क्लट. And that is because of the one of the absence of the factor from the factor number 12. जितने भी फैक्टर है उसमें से कोई एक फैक्टर एब्सेंट होगा तभी तो ब्लड क्लटिंग बंद हो जाता है. तो हेमोफीलिया इज ऑफ 3 different type, A, B, C. And hemophilia A is because of the deficiency of hemophilia factor A. Hemophilia B
ड्यू टू फैक्टर नंबर दैट इज व्हाट ना 9, मतलब 8 नंबर फैक्टर का नाम क्या है? हेमोफिलिक फैक्टर ए, डेफिशिएंसी लीड्स टू हेमोफिलिया ए. फैक्टर नंबर 9 called as anti hemophilic factor B, deficiency results into what na hemophilia B. And 11 factor that is called as anti hemophilic factor C, and deficiency of that factor leads to hemophilia C. So anti hemophilic factor A deficiency leads to hemophilia A. Factor number 9, anti hemophilic factor B or Christmas factor or plasma thromboplastin component. And this is also secreted or synthesized in liver, and deficiency leads to hemophilia B. And hemophilia B का other name है Christmas disease. And that is the reason why this factor is called as Christmas factor, so disease is called as Christmas disease. ठीक है? Next we are coming to factor number 10, Stewart power factor. Stewart power factor, and that is also synthesized in liver. इसीलिए लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. एंड अगर एक्सेस कंजप्शन अल्कोहल किया जाए, आप लोग जानते हैं कि एक्सेस अल्कोहल कंजप्शन लीड्स टू लिवर डैमेज, एंड लिवर डैमेज होने से बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट होता है. फैक्टर नंबर 11, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट. And this is also synthesized in liver. Deficiency leads to hemophilia C. Factor number 12, Asman factor or surface factor. Asman factor or surface factor. It is also synthesized in liver. And the last factor number 13. लेकिन इसमें से एक फैक्टर जो है वो अननोन रहा, मतलब नो एग्जिस्टेंस. इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि फैक्टर, हाउ मेनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड, ना 12. दिस इज फेवरिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर. फेवरिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर और ब्लैकी-लोवेंड फैक्टर सब साइंटिस्ट के नाम से हुआ है. And this is the factor which is synthesized
by blood platelets. ये blood platelet synthesize करता है फैक्टर नंबर 13 को, that is fibrin stabilizing factor. ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है कि हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर, ये याद रखिए कि 12 फैक्टर आर इन्वॉल्वड. फैक्टर नंबर 13 पक्का याद रखना है, दैट इज व्हाट ना फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर. फैक्टर नंबर 4 याद रखना है कैल्शियम, है कि नहीं. इसीलिए कैल्शियम डेफिशिएंसी होगा तो ब्लड क्लॉटिंग विल बी ऑकर और अनेबल टू ऑकर. आप लोग पढ़ेंगे बाद में कि कैल्शियम का और क्या क्या रोल है. नर्वस कंडक्शन में भी रोल है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी रोल है, इसलिए कैल्शियम आपके बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है. धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा. सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे ना, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोआगुलेशन. ठीक है, ये खाली यहाँ तक हो गया. मैकेनिज्म हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे.